So, hi everyone, today we are going to the next project on Python on HackerRank. So, today's problem is find the runner-up score. So, let us now understand the today's program. So, the problem statement is given the participant score sheet for University Sports Day. यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डे का जो स्कोर शीट है पार्टिसिपेंट्स का वो दिया गया है. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रनर अप स्कोर. हमें रनर अप स्कोर को फाइंड करना है उसमें से. यू आर गिवन एन स्कोर्स. हमें जो स्कोर्स है वो नंबर ऑफ उनका जो नंबर है वो एन है. स्टोर द लिस्ट एंड फाइंड द स्कोर ऑफ द रनर अप. हमें उन्हें लिस्ट में स्टोर करना है और उसके बाद उसमें से रनर अप स्कोर को फाइंड करना है. द फर्स्ट लाइन कंटेंट्स एन, द सेकेंड लाइन कंटेंट्स एन एरे ए ऑफ एन इंटीजर्स एक्सेप्ट टू स्पेस. जो पहला लाइन होगा वो एन को कंटेन करेगा, यानी कितने नंबर ऑफ स्कोर्स बने हैं. और जो सेकंड में होगा वो हर स्कोर्स की वैल्यू को एक एरे में इनपुट करेगा और वो भी जो सेपरेट होगा स्पेस से, सेपरेटेड बाय अ स्पेस. तो ये हमारा एन है. एन का जो वैल्यू होगा वो 2 से 10 के बीच में लाई करेगा और एरे जो है हमारा -100 से लेकर 100 के बीच में लाई करेगा. तो हमें बस रनर अप स्कोर को प्रिंट करना है. सो हियर यू विल गेट एन एग्जांपल दैट 5 and number of scores are 5. The first score is 2, second score is 3, third score is 6, fourth score is also 6, and fifth score is 5. So the highest score is 6 and the runner up score is 5. Our output is 5. So let us now solve the program. So here we have given a map which is an array. So first of all we have to store them in a list. So first of all we have to convert the array into a list. So let us create a new variable named score and store all the value in a form of list. So all the variable from map is stored as a list. Now we have to find the maximum value in the array, in the value array. So here we have to calculate the maximum value. So we have a equal to max of score. तो हमें जो लिस्ट है स्कोर लिस्ट, उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालना है और फिर हमें उस लिस्ट में से उसे रिमूव करना है. हमें मिल गया स्कोर लिस्ट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ए में स्टोर हो जाएगा. नाउ वी हैव काउंट द हाउ मेनी टाइम्स द मैक्स वैल्यू विच स्टोर्ड इन द स्कोर लिस्ट. स्कोर लिस्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी बार आ रहा है वो हमें अब कैलकुलेट करनी है. वो हमें एक नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसको हम लोग लेंगे सी. सी इक्वल टू स्कोर लिस्ट में से हमें काउंट करना है कि कितनी बार ए आया है. ए मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्कोर लिस्ट. सो नाउ वी हैव टू रिमूव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्कोर दैट इज कम्स इन द स्कोर लिस्ट. सो फॉर दैट वी हैव टू यूजिंग फॉर लूप फॉर आई इन रेंज ऑफ C. C contains the number of A. How many times A will come in the score? A is the maximum value of the score. अब हमें रिमूव करना है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है A को स्कोर लिस्ट में से. So we have to going to remove all the highest scores which is stored in the value which is stored in the score list. So score dot remove the highest value which is A. Now after removing the highest score from the score list, now we will get the runner up score. If we remove all the highest score from the score list, then we will get the runner up score. Then the remaining highest score is the runner up score. So this is the program.
to solve this problem, now we have to run the test case and see the output. Here we have it. Congratulations, we have passed the test. Now we have to submit the code and going to the next problem. So all the test cases are passed. We also get congratulations. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियोस को पूरा देखने के लिए। यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय फ्रेंड्स।